Hello, everyone. I hope I am audible and visible. Yes or no? Just let me have a quick tech check. I think everything seems to be fine. Okay, so hello and hello, Rishmana Beta. Right, hello and welcome to another edition of the Hindu Analysis. Okay, so I'm pretty much sure कि कल की सारी coverages आपने देखी हैं, and all those coverages are having one particular thing in common, that is war. Okay, so if you are seeing a war, you know, that is associated with the Israel and hello Abhinav, Iran and America. So I'm not sure कि तुमने कितना देखा कितना नहीं. But if you are watching Indian TV channel, that is something जो कि थोड़ा सा problem है. Yes, Indian TV channels से अगर आप war reporting वो कर रहे हो expect कर रहे हो तो they are not at all good. Hi Daksh. हाँ मतलब मैंने कल थोड़ा सा देखने की कोशिश की है एंड none of them are actually getting their facts checked. None of them are getting their what we can say reporting correct, है ना. Logical what are the escalations, क्या है उसके logic, क्या है उसके reasons, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है. So if you are watching TV news channel for the war coverage, make sure कि भैया दूर हो जाओ. So yes, Iran, USA, Israel, right, Middle East, that is going on. कल की न्यूज़ में, कल के सोशल मीडिया में काफी कुछ था. So for example, they shot down F-15, I guess. That was in news. Then later they confirmed कि ये कतर में ही हुआ है अपने उसमें, and it was not from Iran. Then they attacked on several oil and gas refineries. So that is something which is somehow disrupting the global supply chain of the what we can say oil and gas. जिसके कारण काफी ज्यादा I guess 13-14% का जो वो है प्राइस हाइक है वो देखने को मिला था. Then they started this particular Strait of Hormuz close हुआ है, so इसका supply भी बंद हुई है. Because of this instability, uncertainty, दुनिया भर के market जो हैं, including Indian stock market, that is going down. And we are still we are still waiting for the correct answer from our administration कि उनका क्या step है, वो क्या सोच रहे हैं, उसको किस तरीके से process कर रहे हैं. So technically the entire social media, the entire media was full of Iran, Israel, America war. लेबनान की तरफ से जो हजबुल्ला है, right, it joined, Hamas joined. So technically the entire Middle Eastern and Gulf region is under the war, influence of the war, not directly in the war, but that is creating a huge problem in the supply chain. So whether that is Suez Canal, whether that is the Gulf region, Strait of Hormuz, they all are seeing zero what kind of trade traffic, and that is the problem. अब जो ships हैं उनको पूरे अफ्रीका घूम के जाना पड़ रहा है, and that is something जो कि एक costly affair हो रहा है. So yes, the war is affecting Iran, Israel, and USA. Yeah, but is it not affecting world? The answer is no. It's started affecting the world. हमारा लगभग 80% ऑयल जो है वो लगभग मिडिल ईस्ट से हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, एंड उसका 60% ऑयल जो है दैट कम्स फ्रॉम द सेम रीजन वी आर सीइंग द वॉर. ओके दक्ष के हाय दक्ष. बात करेंगे आज उसकी, हम बात करते हैं why it is important and how it actually acts as the positive part for the Iran. So India में इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा लाइक धीरे धीरे ही सी. But when the price will rise, the common folks will start, common people will start facing problems with the daily businesses. तो ये तो कंटिन्यू चल रहा है, and I don't think कि this is going to end anytime soon. राइट, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्गर. अमेरिकन प्रेसिडेंट के हिसाब से 4-5 वीक का उन्होंने वो लिया हुआ है, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्गर अफेयर. राइट, सो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट आर एक्चुअली दी क्या कहना चाहिए आउटकम्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या हुआ कल में. फॉर एग्जांपल कल कुछ 13% का राइस था, 75-72 के आसपास का डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था. एंड जो कल रात तक खत्म होते होते मॉर्निंग तक की जो न्यूज़ है,
उसमें अप्रॉक्सीमेट $80 पर बैरल हो गया, दैट इज अनदर इंक्रीज ऑफ 8%। सो ये कहीं ना कहीं दुनिया को अफेक्ट करेगा। सो प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में, जो प्रॉब्लम है वो दुनिया को अफेक्ट करने वाला, दैट्स फॉर श्योर। Then the another, I cannot say positive news, but news, because I feel sad for this. Uh, India's import of Russian oil is being decreased from, like, I guess 2022. Russian oil import जो है वो decrease हो गया है, and this is something जो I don't see as a positive step from India, because Russian were giving us subsidized oil. Yes, they were giving us huge discount, and because of America's pressure, I think that is what America is seeing, and that is what it looks like. We have reduced the oil supply from Russia, and we are like at the like step at the verge of losing another good ally. तो ये एक नेगेटिव या सैड न्यूज कह सकते हो। The good news for today is India and Canada। तो जी, कनाडा जो है उसने हमारे साथ थोड़ा बहुत पीस का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो करना शुरू कर दिया है, राइट। यस, द थिंग इज, इंडिया एंड कनाडा were not having very good relations from last 2.5 years, because of the killing of a Canadian citizen Hardeep Singh Nijjar. Justin Trudeau accused Indian administration, raw Indian embassy in Canada, directly including the name of our Home Minister Amit Shah, कि इन इसके assassination में हम सबका हाथ है, and that actually created a huge mess in the relation between Canada and India. But now things look cool. That is are coming into what we can say. The relationships are coming back to the track. So it's a good news for India. राइट, सबरीमाला केस इज इन न्यूज। मेक श्योर कि सबरीमाला केस जो है उस पे एक डिटेल नोट्स बना लेना, और अगर तुम नहीं बना पा रहे हो एंड यू नीड अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो बता देना, तो उस पे अपन वो करेंगे, है ना। दिस वाज, क्या कहना चाहिए, लड़ाई झगड़े जो है राइट टू इक्वालिटी की थी। द टेंपल वाज नॉट अलाउइंग women devotees to enter the temple, but in 2018 the Supreme Court, in a historic judgment, said you cannot stop a woman from entering the temple। उसी के अगेंस्ट जो बोर्ड है उसने अपोज किया है, उसको चैलेंज किया है। तो सबरीमाला केस जो है वो भी अपने आप में एक यूनिक सा केस है। द टेम्पल इज यूनिक, द कस्टम्स आर यूनिक, राइट। सो वो न्यूज में था। फिर रिसेंटली वी आर गोइंग टू सी राज्यसभा इलेक्शन, आई गेस इन तमिलनाडु, बिहार एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग महाराष्ट्र। सो राज्यसभा इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। राज्यसभा इलेक्शन के अलावा तो मुझे और कुछ खास उसमें दिखा नहीं है, राइट। एंड यूपी में एक दलित पॉलिटिक्स जो है वो वापस एक न्यूज में आई है, बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी बोल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, अरे यार, एकदम से नाम, बहुजन समाज, मायावती, सॉरी। बहुजन समाज पार्टी जो है उनकी जो सुप्रीमो है मायावती, बिकॉज ऑफ हर द न्यूज और दलित पॉलिटिक्स, जो लीडर थे कांशी राम उनका, बाकी सब चीजें जो है, सोशल नैरेटिव फॉर द इलेक्शन, ये सब जो है वो वापस रीसेटल होना शुरू हुआ है। यूपी इज गोइंग टू सी द इलेक्शन इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, राइट। सो यहाँ पे एक अलग कहानी जो है निकल के आ रही है। अब थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसीज पे आ जाते हैं, बिकॉज यू आर एन अवेयर सिटीजन एंड यू वांट टू बी एन अवेयर सिटीजन, दैट्स व्हाई आई गेस वी आर डिस्कसिंग न्यूज़ टुगेदर। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट आई नो सम पर्टिकुलर थिंग व्हिच यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग दिस टाइम। The misinformation and the war of information is also there. The Western media is showing how and what kind of loss Iran is facing and Iran is losing. Right? The Western media is not showing that attack and killing approximately 200 girl child in a school after the missile attack. They are not going to show that कि कैसे innocent जो particular बच्चियां हैं उनको उनकी death हो गई है। They are going to see several different political angle, but they are not going to see the real war what they are having. Apart from this, so other particular 11 states which are directly or indirectly involved in this war, whether that is Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, UAE, uh, Israel, Lebanon, unki news maybe they are having certain filtration, right? They are not directly giving you the correct news. So make sure to read news at this particular time. Right. So if you are going through some YouTube channel, if you are going through some what we can say media channel, TV channel,
वहां पे देर आर चांसेस कि समथिंग मे बी प्रोपोगेंडा एंड समथिंग मे बी विच इज नॉट रेलेवेंट टू यू दिखाया जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा फिल्ट्रेशन रखेंगे। मेक श्योर करें कि न्यूज़ पढ़ने के बाद ट्राई टू वेरीफाई। देयर आर वीडियो सर्कुलेटिंग जो कि अलग अलग जगह पे दिखाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पे नहीं दिखाए जा रहे हैं, दे आर एआई और नॉट। इन सब में बहुत लंबा चौड़ा वो है, बट द एस्केलेशन इज देयर। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द अपडेट्स व्हेन इट कम्स टू यूएसए, ईरान एंड इजराइल, है ना? So, after the death of supreme leader of Iran, the Ayatollah Ali Khamenei, right, the majority of Western media was talking about this particular fact that Iran is going to surrender soon, right? The Americans were also into that kind of thing. एक एक्सपर्ट है जिन्होंने राइटर्स में अपने व्यूज लिखे, जिन्होंने ये बताया this can turn out to be one of the most, what we can say, critical mistake of Donald Trump in his reign. They mentioned that Donald Trump was having a higher confidence, or we can say overconfidence, after what they did in Venezuela. They attacked the Venezuelan capital, they captured the Maduro, and they take him back to America for the trial. And they thought that if they can do similar kind of thing, Iran, for example, killing the supreme leadership and upper leadership, they can actually like get the people's support. The people will come on the road against the regime, and there will be a regime means they can put their puppet on the Iranian leadership, right? But that is not turning out well for American and Israel. The Israelis are facing huge, what we can say, counterattack from Iran. The American establishment in Middle East, military establishment especially, they are facing huge loss. They compared the economic loss they are facing simply. For example, उन्होंने बोला है कि if I'm talking about interceptor missiles and some other offensive missiles from US and Israel, if they take $1 to $2 million to build to make. On the other half, Iranian small missile and drone, they can cost you from $1,000 to some $100,000. That's it. So अगर मैं बात करूं overall loss की, economic loss की, so somewhere the Iranian are facing lesser economic loss, though they are facing more advanced, what we can say, attack from Israel and USA on their infrastructure, and there are larger number of casualties which they are facing. But economically, the Americans and Israel are facing the better, like more loss, and this can turn out against the American president because he was the one who actually got power back by saying that we will reduce the defense budget, we will reduce the energy walls around the world जो हम वो कर रहे हैं फंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक लॉस के फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है ये अमेरिका को। सेकंड, द अमेरिकन प्लान वाज नॉट फॉर द लॉन्गर वॉर। उनका ये मानना था कि आफ्टर किलिंग द लीडरशिप, राइट, द पीपल विल बी ऑन द रोड एंड दे कैन actually set their puppet, their kind of a positive leadership there, and the things will settle down. But ऐसा नहीं हो रहा। People in Iran, majority of the people in Iran, they are not supporting American or Israeli propaganda, right? They are mourning the loss of their supreme leader, and they are standing with their administration. तो एक यहाँ पे लॉस हुआ है। थर्ड, the Americans were not ready for one particular thing जो कि ईरान ने पहले से सेट कर रखा था आफ्टर 2014। Yes, अमेरिका को ये लगता था कि if they are going to kill the leadership, the entire administrative system, the entire decision-making authority will compromise, and they will not, like they won't do anything because they don't have leadership. But उन्होंने एक ऐसा सिस्टम ईरान ने डेवलप किया है कि in entire Iranian area, they have created approximate 35 different command centers, right? Which, in case of emergency, they can act independently. So let's say they started fighting, the leadership has lost, so they can have the commanders in the different location, they can have their own independent, what we can say, decision making.
and they can attack accordingly, like according to their will, according to their intelligence. तो अभी के टाइम पे प्रॉब्लम यही हो रही है कि इफ दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द फुट्स, राइट, अगर वो सोल्जर्स डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक ईरान को इतनी आसानी से सेटल किया जा सकता है. सेकंड फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इफ द डोनाल्ड ट्रम्प विल डू दिस मिस्टेक दैट दे विल डिप्लॉय द foot soldiers in Iranian, what we can say, region, that is going to turn out, definitely turn out to be one of the biggest and the worst mistake the Donald Trump and Americans are going to do. They did this during the Afghanistan, right? They thought they can kill entire Taliban things, but that come out very rapidly. Iran, on the other half, Iran is fortified with the help of mountains from all the regions, and that can turn out to be a negative thing. These 35 different independent command centers, they act like a guerrilla command center. They can act on their will, they can act on their intelligence. So even if Iran won't have a centralized leadership and decision making, they have a decentralized defense mechanism that can turn out to be one of the worst nightmare of America. So अभी के टाइम पे सिनेरियो यही है कि जो रिसेंट हमने ग्रोथ देखी है उसमें क्या कहना चाहिए, व्हाट वी कैन से, वॉर में, राइट, उसमें पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न एशियन जो रीजन है वो इन्वॉल्व हो चुका है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट, एंड प्रॉब्लम्स वहां से इकोनॉमिक भी हो रही है. सो थोड़ा सा न्यूज में पहले जाते हैं. ईरान टारगेट्स यूएस एसेट इजराइल इन अरब स्टेट. थ्री जेट शॉट डाउन ऑन कुवैत ऑन द फ्रेंडली फायर से यूएस. तीन जो F-15 जेट्स हैं, राइट, वो शॉट डाउन हुए हैं कुवैत में. वो था फ्रेंडली फायर, ऐसा अमेरिका का कहना है. ऑन द अदर हाफ देयर इज न्यूज, देयर इज अ रिपोर्ट व्हिच इज सेइंग कि कहीं ना कहीं जो ईरानियन ड्रोन्स हैं, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए थे. स्टिल टू बी कंफर्मेशन कि क्या चल रहा है क्या नहीं, अभी कंफर्मेशन बाकी है, सो हम कह नहीं सकते. Tehran claims shooting down the US jet. Qatar said its Air Force took down the two Iranian bombers. Right, US will no longer be safe, warns Iran. Trump says big ways is yet to come in the war. तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है. अब थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है ना, उसकी बात कर लेते हैं. तो what exactly is happened? I will be happy if this comes out as another Vietnam. Daksh, I will, like, we should be more happy if this doesn't come out in terms of war. है ना? अमेरिका, अगर ट्रम्प के मुंह में ये चीज दिखा दी जाएगी भाई तू हार रहा है, and the public, American public, if they will accept it कि the Trump has put the American lives into the war, तो वो अगेंस्ट में चले जाएंगे. दैट इज समथिंग जो कि ट्रम्प रोक सकेगा एंड ट्रम्प डाउन कर सकेगा. खैर, पॉइंट पे आते हैं. तो कल की रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल देयर आर 49 टॉप लीडरशिप, right, from Iran, senior leadership from the Iranian regime, including the supreme leader, their IRGC commander, right, the defense minister, some other authorities, they were killed. So total 49 जो leaders हैं उनकी death हो चुकी है. And trust me, the Iran is not ready to surrender. And Iran is in the revenge mode. यस, जो टॉप सिक्योरिटी काउंसिल है वहां की तरफ से जो अली लारज़ानी है, उनका एक स्टेटमेंट है दैट वी विल नॉट नेगोशिएट विद द टेररिस्ट स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट. Says the negotiation date has been over and we are not at all going to negotiate. इसके पीछे का एक रीजन भी है. 2025 में there was a 12 days war, जिसके बाद फिर they started negotiating, they started the ceasefire. And what exactly happened? Within 7-8 months, they attacked on Iran again. So they understand that if this time the ceasefire and negotiation happen, that will be termed as the Iranian safeguard. But if the negotiation is not happening, Americans will look it as their loss. क्योंकि कोई हमसे negotiate करने को ही तैयार नहीं है. और negotiation होगा तो डोनाल्ड ट्रम्प will project it as their victory. So प्री negotiation तो नहीं दिख रहा है, ये लंबा चलने वाला affair है. So let's come back to the development that 49 leaders जो हैं मरे हैं, उनकी डेथ हुई है, and बावजूद इसके the Iran is not ready to surrender, right? Then comes to Strait of Hormuz. अब किसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा. Strait of Hormuz. The Iranian has reportedly closed and declared that Strait of Hormuz
will close for all kind of shipping, right? And that surges the global oil price. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक 30-35 किलोमीटर का एक लंबा सा बेल्ट है बिफोर द गल्फ रीजन. दिस इज द प्लेस जहां से दुनिया भर का लगभग 23% ऑयल, है ना, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट है बट ऑन एन एवरेज 20-25% के बीच में ऑयल, एंड सिमिलरली अप्रोक्सीमेट 25% ऑफ नेचुरल गैस पास होता है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, राइट? सो इफ दिस क्लोजेस, दुनिया भर में अप्रोक्सीमेट 1/4 ऑफ ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस सप्लाईज interrupt. And if interrupts, like 1/4 of the supply interrupts, that clearly means it's going to create huge rise in the oil price. Or ये, this is not going to like affect on one country only. This is going to affect majority of countries and especially the developing economies. राइट? सो जो अफ्रीकन रीजन है, जो साउथ एशियन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन है, दे ऑल आर गोइंग टू फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज जो है वो क्लोज हो चुकी है अभी. दैट इज व्हाट रिपोर्ट इज. इवन इन द मॉर्निंग आई वाज लाइक लुकिंग ऑन टू सम ट्विटर for the trending news of this particular war. The majority of good and positive account जो correct news देते हैं, they are still agreeing कि हाँ भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज है. Moving on to the next one, the entry of Hezbollah. राइट, यस, हिजबुल्लाह की एंट्री जो है वो हो चुकी है. कल शाम तक की अगर बात करें तो हिजबुल्लाह में वो बता देता हूँ ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ से. द हिजबुल्लाह, वो क्या कहते हैं, रिटर्स की तरफ से, हिजबुल्लाह ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर लॉन्चिंग हैवी मिसाइल्स salvos from Lebanon into the northern Israel. Israel responded with the strategic bombing of Beirut and the Ka Valley. तो हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है. इसराइल के अगेंस्ट एक और फ्रंट जो है वो ओपन हो गया है. हाउ इट्स नेगेटिव फॉर इसराइल, अगर उसकी बात करें तो इसराइल मेनली रिलायज ऑन देयर व्हाट वी कैन से एयर डिफेंस सिस्टम. Right, for example, Iron Dome, Iron Beam, something like this. So if they are concentrating on one front only from Iran, तो इनके पास number of interceptor missiles थोड़ी सी ज्यादा होंगी. But if there is another front that is being opened by the Hezbollah, वहां भी इन्हें interceptor missile लगानी पड़ेगी. And there is this report that the maximum capacity of manufacturing the interceptor missile by the Israel is close to 100. सो ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव, बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है. सो हिजबुल्लाह का भी जो फ्रंट है वो खुल चुका है ना. जो की अटैक्स हैं कल की अगर मैं बात करूं तो कल भी पूरे दिन जो ईरान का रिटालिएशन है, दैट इज बीइंग सीन. दे हैव लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, दे हैव लॉन्च्ड ड्रोन्स एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. मैं कुछ नाम गिना देता हूँ. फॉर एग्जांपल इसराइल, यूएस एसेट इन गल्फ स्टेट, फॉर एग्जांपल रियाद, कुवैत, दुबई, मनामा दैट इज इन बहरीन, राइट. और इसराइल में तो हो ही रहा, तुम्हें पता है, तेल अवीव से लेके डिफरेंट सिटीज में. सो ईरान इज नॉट अटैकिंग, इट इज काइंड ऑफ अ रिटालिएशन, काइंड ऑफ अ रिवेंज मोड जो चालू है, राइट. फिर प्रॉब्लम जो है अब जो है, लाइक नाउ आफ्टर दीज अटैक्स द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली गेटिंग बिगर. फॉर एग्जांपल द एम्बेसी स्ट्राइक. US embassy in Riyadh was struck by drone. The embassy compound in Kuwait reportedly hit. So Riyadh and the Kuwait, right? The both of these US embassies were attacked with the help of drone. So that means this is getting critical. Too critical because these places have nothing to do with the war, but they are hosting the US military infrastructure, and because of that, these countries are becoming target of Iran. So this can actually lead pressure on USA from these countries कि भैया जल्द से जल्द ये वॉर खत्म करो क्योंकि हमारे यहाँ पे अटैक हो रहा है. सेकंड, द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज पर्टिकुलर कंट्री. हम यूएस एम्बेसी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो वो है, क्या कहना चाहिए, फेयरमोंट द पाम, ये दुबई का एक लग्जरी होटल है ना, ये दुबई के एयरपोर्ट है, दोहा का एयरपोर्ट है. दे आर बीइंग टारगेटेड बाय ईरान. This is something that can actually impact the economic activities there. Yes, these places like Middle Eastern countries are known as the safe haven for investors.
They are termed as one of the neutral, safe ground for everyone. But if this kind of attack is happening, people will stop investing. People will stop buying properties over there. So thoda sa unko bhi negative hoga. So these countries can also push and pressurize America कि भैया जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म होना चाहिए। राइट। लेबनान का फ्रंट ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं कि लेबनान का फ्रंट क्या कहना चाहिए ओपन होने से इसराइल को थोड़ा सा प्रॉब्लम और होगी। जो रीजनल इम्पैक्ट्स है अगर उनकी बात करें तो सिविलियन एंड इकोनॉमिक डैमेज तो आपको पता ही है। राइट। अमेजन वेब सर्विस का डेटा सेंटर, या they are targeting infrast so they also attack the amazing data web service data center in UAE, the Burj Al Arab, yes, the Palm Hotel in Dubai, right? Pheramon Palm, that's in close to Burj Al Arab, one of the seven-star hotel, right? तो ये अगर इतने बड़े टारगेट्स हो सकते हैं हिट तो फिर छोटे छोटे तो हो ही रहे होंगे। देन कम्स द एविएशन सेक्टर। यस गाइस, प्लेन्स नहीं उड़ रहे हैं। Yeah, thousands of flight from the Middle East, and they are being cancelled. The airports are closed. One of the busiest airport like Doha, Dubai, Kuwait, they are temporarily closed. People are being reportedly given notice that do not come near major infrastructure जो है installations जो हैं यूएस के बेस के उनके आसपास मत आओ बिकॉज देर आर गोइंग टू बी अटैक। ठीक। अब बात करते हैं कि अमेरिका और इसराइल क्या कह रहे हैं। सो कल मॉर्निंग में व्हेन वी हैड आवर लास्ट सेशन, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। अभी आ रहे हैं दक्ष, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। So when we discuss our last session, that is was in morning. After that, I saw the Twitter from the IDF, that is Israeli Defense Force, American put as the President of United States. उनकी तरफ से they were getting very happy that we did it. The Iranians are going to come and they are going to surrender, etc., etc. Right? So they already started celebrating, but the bad news started coming after 2 3 p.m. Right? When they started facing the huge loss, they started understanding कि उन्होंने अपने ही प्लेन गिरा दिए, the Iranians are not ready to surrender, etc., etc. यूएस एंड इसराइल कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर उसमें चले गए हैं जिसको आप डेटा वॉर कह सकते हो, इंफॉर्मेशन वॉर। Yes, they are spreading that kind of information. The Iranians are losing, they are winning, and the real data is still to be there. So अगर ओवरऑल फैशन में मैं पोर्ट ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेटमेंट की बात करूं, the President of United States predicted the war would last for 4 to 5 weeks, but warned of a force that has never been seen before on if Iran continues its retaliation. So Americans को भी कहीं ना कहीं ये चीज अब पता चल गई है कि this is not going to be a short term affair, right? 4 to 5 weeks जो है वो they are expecting, but experts are expecting कि ईरान के पास जिस तरीके की कमांड सेंटर है, डिसेंट्रलाइज कमांड सेंटर है, this can go very long and American and Israel they are going to face huge loss in terms of finance. Israelis are also going to face huge loss in terms of infrastructure. Second, that is UK. Yes, the Prime Minister Keir Starmer granted the US permission to use the British base Diego Garcia Acroti for the defensive and offensive operation. तो यूके जो है वो यूएस के साथ आ चुका है, राइट? है ना? एंड उन्होंने अपना जो वन ऑफ द मेजर बेस इन दैट पर्टिकुलर रीजन डिएगो गार्सिया जो है उसको ऑपरेट करने के लिए उसको यूएस की ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव स्ट्राइक के लिए यूज करने की परमिशन भी दे दी है। सो ये एक नया पर्टिकुलर वो है, एस्टैब्लिशमेंट है, इसमें नया चीज होके आई है। एंड द ग्लोबल अलर्ट्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल अलर्ट्स की क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईरान के साइड कौन कौन आ रहा है। तो अगर मैं ईरान की तरफ की बात करूं तो रशिया, चाइना, right? North Korea, some of the countries from the Southeast Asia, for example, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, they are somehow showing support to the Iranian regime, and they shown the what we can say.
हम्म, उन्होंने दुख प्रकट किया जो ईरानियन सुप्रीम लीडर थे उनकी डेथ पे। तो पब्लिक सेंटिमेंट इज स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड द ईरान, एंड इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, बिकॉज दिस इज द मंथ ऑफ रमजान, and you are killing like the biggest Shia leader, right, in the month of Ramadan, that already started gaining the public sentiments toward them. तो यहाँ पे थोड़ा सा जो local countries, even those countries which are directly indirectly involved into the war, the local people are not supporting this. So यहाँ पे थोड़ा सा चीजें हैं कि हाँ, globally ईरान के साइड चीजें झुक रही हैं. Russia and China, they condemned, North Korea including, they condemned the act of killing a sovereign leader of any state, and they are condemning Russia, sorry, USA and Israel. There is this particular export which was talking with the Reuters. Who said okay, if the oil supply is being disrupted for the longer period of time, China may use the pressure tactics of rare minerals, right, against the USA, because they want they will want this war should end earliest. So they will stop sending the rare minerals, which is used in missiles and chips, which can actually help the product, like hold the production of these kind of missile attack missile from America. तो यहाँ पे China can play a huge role. The Russians can give supply to Iranians in terms of weapon and soldiers. तो अगर ये लंबा चलता है तो Russia and China directly or indirectly may get involved, or this is something which is going to make negative impact. तो globally ये particular चीज चल रही है. Apart from this, क्या कहना चाहिए, तो यूएस डिपार्टमेंट है, दे हैव asked all the Americans to depart from more than a dozen Middle Eastern countries immediately. So ये कहीं ना कहीं एक इस टाइप का वो है, व्हाट वी कैन से, क्या कहना चाहिए, जगह है, ये पर्टिकुलर वो है, ऑर्डर है दैट एक्चुअली शोज कि हो सकता है बिकॉज ऑफ इमोशनल सेंटिमेंट इज टुवर्ड ईरान, तो लोकली कहीं अमेरिकन सिटीजन्स को बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा अटैक्स टाइप की चीजें ना झेलनी पड़े. So they want every citizen from the Middle Eastern countries, American citizens should leave that particular land at the earliest. So this was the overall development that we have seen from last one day. Right. Okay. I'm a CS student. I need a paper that covers finances news as well. As I'm into all this, which paper should I subscribe to? Harsh, from being my side, the Hindu and Economics Times are best for you. Okay, hello Akash. So that was US and Israel and Iran conflict. Day, I guess, three, right? आज fourth day है ना? So काफी लंबा चौड़ा हो गया यार, मैंने काफी भाषण दे दिया क्यों? I did a huge research, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. Right? Yes, I'm reading different newspapers, Al Jazeera, Reuters, Washington Post, ये वो local newspaper तो अपन कर ही रहे हैं. I'm seeing the local YouTube channels of local news channel, and by you cannot even like understand. After 15-20 minutes of entertainment started becoming pain. So I stopped doing that. Then I went to the one of like authentic journalism. वहाँ पे YouTube में देखने के बाद, so I got huge information in terms of different experts. So that's why we can talk about it. So that was US, Iran, and Israel. Let's move to the next big topic for today. That is India and Canada. Right. यस, दो दीवान एक शहर में काइंड ऑफ थिंग चल रही है. सो थोड़ा सा न्यूज में चले जाते हैं. सो आई टोल्ड यू दैट रशियन ऑयल इंपोर्ट एट न्यू लो, वेस्ट एशिया शेयर अप. सो वेस्टर्न एशिया जो है मिडिल ईस्ट जिसको कहते हैं, विच इज करेंटली इन वॉर, उनका जो ऑयल शेयर है वो इंक्रीज होने लगा है. राइट. रशियन ऑयल इंपोर्ट जो है वो अब तक के सबसे कम उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022. राइट. यस, हम जितना लेते थे उसके 20% पे आ गए हैं. सो अगेन पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर न्यूज, बिकॉज दे आर थिंकिंग बाय डूइंग दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर वी आर लूजिंग वन ऑफ आवर बेस्ट एलाई, दैट इज रशिया. राइट. देन कम्स इंडिया एंड कनाडा. यस. भाई एक 1.5 साल 2 साल पहले दे वर फाइटिंग विद ईच अदर ऑन हरदीप सिंह नेचर. I mean, the Canadian Prime Minister Justin Trudeau
accused Indian agencies and our Home Ministry directly into the parliament. And now we are into that particular thing where in the next 2, 3 months, we are going to finalize a free trade agreement. We have a huge uranium deal where 5 million pounds uranium for the constructive purpose will be imported and different thing. So थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि क्या सीन है. Though this news is being suppressed due to the Iran-Israel news, सो चलो बात करते हैं. एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट कल मैंने एक उसमें सुना, एक एक्सपर्ट का, कि दिस इज गोइंग, इंडिया एंड कनाडा आर गोइंग टू मीट अ रीसेट बटन, राइट, on this diplomatic relation during this visit of Canadian Prime Minister in India. Reset button इसलिए because they are aware कि how important they are to each other, right? From 2023, right? Assassination of Hadip Singh Nijjar from 2023 to now 2026. These relations were in halt. The diplomatic freeze was there. They get their embassy, like each other's embassy, out of the picture. And तब से लेके अब तक we didn't had much, what we can say, mutual and diplomatic cooperation. But it's a kind of time when we are seeing a reset button for this diplomatic relation. So जो key developments हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो first of all, a 2.6 billion dollars agreement was signed, right, for overall 22 million pound of uranium from 2027 to 2035. So overall fashion में we are going to buy $2.6 billion worth of uranium, which is like approximately 22 million pounds from 2027 to 2035 for the civil nuclear energy goal. राइट, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है. When it comes to civil nuclear energy goal, that clearly means we have promised a Canadian that we are not going to make bombs out of it. We are going to use it for the civil purpose. That is the nuclear energy, research program, medical, and some other places. Right? But not to nuclear weapon. Then both countries have agreed to a condition which is known as the trade reset. So overall fashion में अगर बात करें, तो they have concluded a CEPA, that is Comprehensive Economic Partnership Agreement, right? They are to conclude a comprehensive economic partnership agreement by the end of 2026, right? With the target of doubling the bilateral trade to $70 billion by 2030. So इस particular उसमें साल के end के पहले they are supposed to conclude, they are supposed to finalize the terms for a trade reset comprehensive economic partnership agreement, right? So that they can double their trade that is worth of $70 billion, right? They also initiated a Indo-Canada defense dialogue, right? Yes. They initiated a new Indo-Canada defense dialogue to enhance the cooperation in the maritime domain, awareness and military exchanges. So defense dialogue जो है उस पे भी क्या हुई है, क्या कहना चाहिए, improvement हुआ है. Then there are two particular sectors which are important जहाँ पे हमें बहुत जरूरी था, वो था energy and mineral, and the second sector was education. Yes, there are a huge number of students who visit Canada for their like a foreign education, and this is an easy way from Canada to USA जाके नौकरी करने का. तो इन दोनों पे भी लंबी चौड़ी बात हुई. ऑफिशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यदि agreement were reached to a critical mineral clean energy, Canada also announced it will join the International Solar Alliance and Global Biofuel Alliance initiated by India. अगर बात करें तो न्यू जॉइंट टैलेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी वाज लॉन्च्ड टू strengthen the academic cooperation, even as Indian student permitted approval saw a sharp decline from 2024-2025 due to
द स्ट्रिक्ट कैनेडियन रेगुलेशन। सो एजुकेशन और एकेडमिक में भी क्या हुआ है, ग्रोथ की बात की गई है। एनर्जी एंड मिनरल, जो रेयर अर्थ मिनरल है, यूरेनियम है, उनके बीच में भी पॉजिटिव साइन आया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है एंड जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, राइट, वो दोनों जो कनाडा है वो ज्वाइन करने के लिए तैयार। एक एक्सपर्ट कमेंट बताता हूँ, जो को समझाएगा कि व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ विजिट फ्रॉम द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया। सिंपली अगर उनकी तरफ से बात करें तो द विजिट इज सीन एज अ स्ट्रेटेजिक पिवट फॉर Canada to diversify its trade away from United States amid ongoing tariff tension. Relations has previously hit rock bottom in the late 2023 after allegation regarding the killing of a Sikh separatist leader, which India denied. The High Commissioners were restrained, diplomatic services restored in the last year amid, paving the way for this week's summit. तो कहीं ना कहीं कनाडा को ये एक पर्टिकुलर चीज खाती है कि अमेरिकन जो है हमारे ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है वो लगाते हैं। तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड दे वांट, एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट, यू नो दिस वेरी वेल। सो दे वांट कि इंडिया हमारे साथ बेटर ट्रेड एग्रीमेंट में आए। देयर इज अ टॉक अबाउट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज वेल। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी एक फाइनलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो अमेरिका, कनाडा, आर दे रीसेटिंग देयर डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप? Yes. Are they getting it to the next level? The answer is yes. That right. The reason: defense dialogues, military exchange, education, rare uranium, and lot of things. So that was India and Canada for you. And let's move to the next news. Right, इधर तो state news में तो politics ही रही है. I told you entry of women at Sabrimala temple body opposes the SC ruling. We discussed this कि भैया 2018 में ही the order was given from Supreme Court that women are allowed in this particular temple, but the board of temple, right, they are not accepting it, they are opposing it. तो थोड़ा सा एक बार देख लेना इसको। ओके, सो ये न्यूज़ थोड़ी सी पॉलिटिकल हो सकती है, सो इफ आई हर्ड समवंस पॉलिटिकल स्टेटमेंट, प्लीज डोंट लाइक व्हाट वी कैन से टेक इट नेगेटिव। मोदी जी ने सऊदी क्राउन प्रिंस, जॉर्डन, बहरीन के किंग से बात की है, बट ईरान वाज वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट एलाय। मोदी जी स्टिल yet to like publish kind of talks on this, one message for the Iranian supreme leader, right? But they are talking to the other parties. So yesterday I saw one of the experts saying this shows a clear shift of the policy or foreign policy of India, that they no longer, what we can say, got involved into the democratic aspect. So India, the motherland of democracy, is somewhere compromising their views. Surprising how Epstein file got overshadowed by Iran US war. Aksh, what do you think? This was the motive of Iran's on Iran attack. But on the other half, they were talking about the peace, and suddenly out of nowhere, Trump decided to go on full on Rohit Mehra mode, and he decided कि वो कंप्यूटर लाके ओ करके अटैक कर देगा। So कुछ तो है, ठीक है। सो यहाँ पे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोदी जी को कि ईरान वाज वन ऑफ द एलाइज, जिसने हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसने हमें कई बार पाकिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म में, ऑयल के टर्म पे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म पे काफी चीजों पे हमारी हेल्प की थी। सो वी शुड एटलीस्ट हैव कर्टेसी टू शो सम रिस्पेक्ट, राइट। एंड जो जिस तरीके की अपनी फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिल रहा है, दैट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट वेलकमिंग इट, राइट। उनको जो ओवरऑल वो था ट्वीट में, उसमें उन्होंने बताया था कि मैंने इन लोगों से बात की है फॉर द वेल बीइंग ऑफ इंडियन सिटीजन, राइट। एंड ये भी बोला है कि भैया जल्दी से जल्दी जो है वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी जो है उसको क्या करें, वो भी उसको रीस्टैब्लिश करें, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दे ही आल्सो मेंशन कि भैया ये जो अटैक सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह में हो रहे हैं वो गलत है। सो समवेयर this is showing कि we are going against Iran, right? दक्ष क्या कह रहे हो? तो what about Sabar port?
Come on, this is the same quote in 2024 election. Modi ji was saying it was one of my biggest diplomatic victory. So what is the criticism? The criticism is about it. कि we are seeing a strategic shift, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रल रहे हैं, पीस के साथ रहे हैं, डेमोक्रेसी के साथ रहे हैं. सो दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है. इंडिगो टू फ्लाइट 10 will leave flight for the passengers stranded in Jeddah. Right, this is the same Indigo हाँ जिसने इतने दिनों तक पब्लिक को परेशान कर रखा था. एंड चाबार पोर्ट में भी अटैक हुआ उसकी क्लोज बाय, तुम्हें बता दूं जहां हमारे इन्वेस्टमेंट्स है. Attack on tankers amid escalating Iran-Israel war raise alarm to the India's seafarers safety. जी हाँ भाई साहब, अभी के टाइम पे पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाकी सब जो है वो क्या है, fault पे है, because there is no insurance company which is ready to give insurance to the large vessels amid this kind of war and tension. Oil tankers are being hit. ओमान के और आई गेस बहरीन के टैंकर्स जो है उन्होंने हिट भी किए हैं ईरान में. राइट. तो अभी के टाइम पे तो प्रॉब्लम चल रहा है और लंबा चलने वाला है. ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. बंगाल एसआईआर. हाँ, ये थोड़ा सा बेचारा वो हो गया था, मिस हो गया था पिछले 2-3 दिन से, बट दिस इज बैक इन द न्यूज. राइट. सो द पीपल इन बंगाल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डिलीशन ऑफ देयर नेम फ्रॉम द फाइनल इलेक्टोरल रोल. दे आर सेइंग कि हमारी बात नहीं सुनी गई. We presented the papers. We wanted our name in electoral roll. We wanted to vote, right? But nothing happened. Close to 60 lakh voters have been cut from the state electoral roll. So that is something जो अभी थोड़ा सा और लंबा चलने वाला है. Right? चलो आगे चलते हैं. Let's see what are Israel US, the war to build a unipolar West Asia. ये एक बहुत प्यारा एडिटोरियल था. राइट. That is saying कि how the diversification of a power in the Middle East is not at all what we can say in favor of America and Israel. So they are creating a unipolar West Asia so that they can get majority of oil and petroleum according to their will. सो ये इसको एक बार जरूर पढ़ना, है ना, ये अच्छा एडिटोरियल था. यूजीसी रिफॉर्म की डिबेट और जो वो है क्या कहना चाहिए जीएसटी रैशनलाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ लेना. दिस इज गुड ओपिनियन. And then there was nothing. Economics news में we discussed this yesterday, right? कि भैया अभी मार्केट खुले नहीं है, but when the market will open, the stock market will goes down, the oil price will go up, and this is a kind of tension. This is a kind of emergency situation, recession kind of situation. So gold price is also increasing. Right, there was a time, I guess, BSE was dipped by 1600 points. तो ये एक बड़ा वो था भाई. निफ्टी भी आई गेस कुछ 20 30 50 पॉइंट के अराउंड गिर रही थी. सो प्रॉब्लम तो है. दिस वॉर इज गोइंग टू कॉस्ट ह्यूज. Oil and gas prices continue to spike on war. We discuss about it. Fresh Middle Eastern curveball raises the risk of very world market. Potential power struggle in Iran versus US versus Israel. It's going to create huge mess. ये हमने पहले ही बोल दिया था. Now, जितनी बातें हमने की, whatever we discuss about the US-Israel-Iran conflict, you can find all these things in here. Trump's delusional fantasies have led to chaos, says Iranian security chief. जो Iranian security chief है, उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि this particular guy जो अली लज़रानी है, he put the entire reasons, what we can say, safety and peace and stability, because of his delusional fantasies. Right, and Israel के attack से 52 killed in Lebanon's about expand strike after the Hezbollah fires. Putin urged ceasefire in West Asia during the call with the regional leaders. Trump lists war objectives, says Iran operation to last 4 to 5 weeks. We already discussed. Starmer allow US to utilize UK base to strike on Iran. वही डिएगो गार्सिया and बाकी सारी चीजों की बात अपन ने की थी. So
Sir, if World War happen, then CLAT is going to happen. Don't worry. Right. It's not going to happen. World War Three is a war जो मिसाइल्स एंड बाकी चीजों से नहीं लड़ा जाएगा. Right. That war is going to be the final war. अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड बाकी चीजों से लड़ा गया वॉर स्टार्ट होगा तो. World War Three is going to be the war of information, data, and technical superiority, economic imperialism. है ना? So लोड मत हो. तुम्हारा क्लैट होगा, that's for sure. Be ready for CLAT. Be ready to go to NLUs. Be ready to learn new laws relevant to AI and other things. ठीक है. Greenland vote in Danish election to test the appetite for the independence. अपोजिशन पार्टी जो है वो सेपरेशन चाह रही थी बट द रूलिंग पार्टी वांट्स टू गो फॉर दिस. तो वहां पे इलेक्शन भी हुआ. फ्रांस टू इंक्रीज द न्यूक्लियर वॉर हेड टू इंश्योर डिस्ट्रक्टिव पावर सेज मैक्रोन. राइट. Glad itself called as the D-Day. Glad every year it's a new world war kind of thing. है ना. So France अब अपनी न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ा रहे. We discussed about it. If the countries are not safe in a region with the American influence like this, the people will start increasing their warhead. France started it, right? UN nuclear watchdog holds emergency meet in Vienna amid the war in West Asia. International Atomic Energy Agency जो है, they had an emergency meeting to analyze, to calculate the situation, whether that can escalate into something like this, जो मैं भी discuss कर रहे हैं. But I don't find it कि ऐसा कुछ होने वाला है. Right. संजू सैमसन के लिए अच्छे एडिटोरियल निकले हैं. Samson, from an enigma to a super king, without a doubt, one of the finest batsmen. और कल के बाद तो भाई मैं भी बहुत वो था परसों के बाद. So ready for question and answer, guys? Yes. चलो. So let's start with question number one. Russia's share in the India's crude oil import fell below 20% for the first time since. Right. रशिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट इंडिया के लिए 20% से भी कम हो गया है पहली बार से. ऑप्शंस आर जनवरी 21, मई 2022, दिसंबर 2023 या जुलाई 2024. बताओ. वेरी गुड दक्ष. द करेक्ट आंसर इज मई 2022. वेरी गुड आशीष. वेरी गुड दक्ष. राइट. मई 2022 से अब जाके इतना कम हुआ है कि हम उसे लेस देन 20% कैटेगरी में लेके जा चुके हैं. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. In January 2026, the Russia shares India's oil import declined to approximately. Right. In January 2026 जो रशियन इंपोर्ट है ऑयल का वो लगभग कितने परसेंट डिप कर गया है. ऑप्शंस आर 27%, 33, 19.3, 15%. बताओ. Obviously 19.3 we told कि about 20% के आसपास डिप हो चुका है. Right, so 19.3 is the most accurate answer. Yes, everyone. Very good, Rishpanda, Daksh. No, Daksh, 19.3%. Unritual music, etc., etc. Chalo, let's move to the next one. The Strait of Hormuz is a strategically important because it is a key route for. Strait of Hormuz एक strategic importance की जगह है क्योंकि एक key route है for rare earth export, global crude oil supply, coal transportation और military submarine route. बताओ मित्रों.
क्रूड ऑयल ऑब्वियसली, इसलिए तो न्यूज में चल रहा है आजकल भर भर के। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट इज रिव्यूइंग विच 2018 वर्डिक्ट रिलेटेड टू रिलीजियस राइट्स। कौन सा 2018 का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट वापस रिव्यू करी है जो कि धार्मिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शंस आर ट्रिपल तलाक जजमेंट, राम जन्मभूमि केस, सबरीमाला वुमेन एंट्री वर्डिक्ट और आधार जजमेंट। बताओ। वेरी गुड, द सबरीमाला, है ना? अभी अपन ने बात की थी कि जो बोर्ड है टेम्पल का, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, दे वांट टू रिव्यू इट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हर एक इंडिविजुअल को मंदिर जाने का राइट होगा, सो विमेंस को आप रोक नहीं सकते। ठीक है, चले नेक्स्ट। इंडिया कनाडा एग्रीमेंट साइंड रिसेंटली इंक्लूड्स अ 1.9 बिलियन डॉलर डील फॉर। इंडिया और कनाडा के बीच में जो अभी डील साइन हुई है उसमें 1.9 बिलियन डॉलर की किस चीज की डील भी है? ऑप्शंस आर लिथियम इंपोर्ट्स, यूरेनियम सप्लाई, डिफेंस एयरक्राफ्ट और सोलर पैनल्स। बताओ, टेल मी। वेरी गुड आशीष, रिश्पर्णा, दक्ष। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम सप्लाई। वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि यूरेनियम सप्लाई के ऊपर क्या है अपना, क्या कहते हैं, 1.9 बिलियन डॉलर की डील है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। Canada agreed to join which India-led initiative recently? राइट, कनाडा ने इसमें से कौन सा इनिशिएटिव ज्वाइन करने का एग्री किया है जो इंडिया लेड है? ऑप्शंस आर क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बताओ। वेरी गुड गाइस, द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना? ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द किलिंग ऑफ विच कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट वाज स्ट्रीम्ड? राइट, इंडिया कनाडा रिलेशन। इनमें से किस कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट की जो डेथ है, जो मर्डर है, उसने इंडिया कनाडा के रिलेशन को स्ट्रेन या रोक के रखा? ऑप्शन आर जगमीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर, अमृतपाल सिंह या गुरपंत गुरपत गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू तो आई गेस स्टिल अलाइव। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड गाइस, दैट इज निज्जर, है ना, हरदीप सिंह निज्जर। पन्नू स्टिल अलाइव, आई मीन, भाई उसका अलग ही स्वैग है, वो बैठ के वीडियोस बनाता है अमेरिका में, एंड इज एन अमेरिकन सिटीजन आई थिंक, एंड आई गेस नहीं नहीं है, राइट। और लेदर जैकेट वैकेट पहन के एंड टिंगू सा ऐसा दिखने वाला, एंड ही वांट्स टू सेपरेट पंजाब एज खालिस्तान फ्रॉम इंडिया। मतलब भाई थोड़ा पर्सनालिटी से ज्यादा बोल जाते हैं, है ना? काश पन्नू होता। नहीं भाई, असैसिनेशन इज नेवर समथिंग जो हम वेलकम करते हैं। किलिंग वायलेंस से दूर होके, है ना, बेटर है कि हम डायलॉग से बात करें। पन्नों को गायब करना इम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन आईआईपी ग्रोथ इन जनवरी 2026 स्लोड टू। इंडिया का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जनवरी में कितना नीचे गया या कितना परसेंट रहा? ऑप्शंस आर 7.8, 6.5, 5.5, 4.8। बताओ। बी, डी। करेक्ट आंसर इज डी, 4.8। यस, काफी गिर गया जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इंडेक्स। है, प्रॉब्लम तो चल रही है यार।
Indian Navy deployed under Operation Sankalp is primarily safeguarding what? राइट सो इंडियन नेवी जो डिप्लॉय की गई है अंडर दिस ऑपरेशन संकल्प वो प्राइमरली किसको सेफ गार्ड कर रही है